Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. GST collection for July this year crosses 1,65,000 crore rupees level, witnesses 11% growth over the same month last year. Almost 88% of 2,000 rupee banknotes received back from circulation, says RBI. Domestic benchmark indices slipped marginally, and gold falls to 59,200 rupees per 10 gram for August contracts at MCX. देश में इस वर्ष जुलाई में जीएसटी संग्रह 1,65,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में हुई इस बार 11% की वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 2,000 रुपए के लगभग 88% नोट चलन से वापस लौट आए। घरेलू शेयर बाजार में आज हुई मामूली गिरावट और एमसीएक्स में अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में घटकर 59,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया। The gross goods and services tax GST revenue collection for July stood at 1,65,105 crore rupees, which is 11% higher than the same month last year. Out of the total collection, central goods and services tax is 29,773 crore rupees. State goods and services tax is 37,623 crore rupees. Integrated goods and services tax is 85,930 crore rupees and the cess is 11,779 crore rupees. The revenues from domestic transactions, including import of services, are also 15% higher as compared to the same month last year. It marked the fifth time that the gross GST collection crossed the 1.60 lakh crore rupee mark. Ms. Ramchandran, we've been seeing a steady increase in the GST collections over the last so many months now. What are the main factors, the biggest factors that have led to that have led to this continuous increase? Well, first of all, it is basically due to the economic revival that has brought about this increase. I mean, this is the GST data is one of the key indicators showing the health of the economy, and clearly the economic revival after the pandemic and after the geopolitical events of last year has come into full gear, and that's why we are seeing this consistent increase. And it must be recalled that when GST was launched, at that time there were so many concerns over whether we would be able to reach the level of even 1 lakh crore per month, because states were also concerned about the amount that they would have to get, and there was a lot of apprehension, and that was only natural because this was a completely new tax. But in fact, the pace at which this increase has come in terms of the monthly revenue accruals is much faster than anyone had anticipated. And coming back to the main point, that it indicates the revival of the economy, the fact that there is the manufacturing output, and also you getting it from the retail sector, you're getting it from all the sectors of the economy where GST is levied. And also, I think one important factor needs to be mentioned is that the introduction of GST brought about a great deal of digitization of the tax net, especially the informal tax net. A lot of small and tiny businesses, a lot of small retail outlets
which were not, which were not paying tax. One of the reasons was they found it difficult to pay tax, just simply with the procedures and the paperwork and all that. So a lot of them digitized, and they have come into the tax net, and they are efficiently and effectively paying their taxes. So this is a great achievement of this new tax. And do you think that now the time has come that, to consider rate rationalization, or should I say the slab rationalization for the GST, which has been, a demand for quite some time now? Yes. Now, we have to remember that ideally, the concept of the goods and services tax was meant to be a single point tax. So because of the complexity of the taxation system in this country, and the competing claims of state governments, their revenues, etc., it was made, it is not just one tax, we now have many taxes. So we have an interstate tax and we have an intrastate tax. So we have all these levels. And also, as you pointed out, the slabs. Instead of having just one level of tax, whether it is 8% or 16%, we have several. We have 5, we have 18, we have 28. So this is something that creates more complexity. Of course, it is far more simple than it was before the introduction of GST, because then you had a multiplicity of taxes and you had so many taxes and they were all levied at different rates. But once we have introduced this, you are very right that this is now the time to introduce, at least I think we should reduce the slab. And perhaps, we can get rid of the highest level of 28%, because I really feel that is not justified. We need to we have of taxation. I mean, and you simply cannot say that, we feel that this particular commodity is not good for the people and therefore we levy a sin tax. I don't think that is a proper rationale in terms of taxation. सुषमा जी, दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक ये कि ये लगातार जो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का 5/12 यानी 1,60,000 करोड़ से ऊपर का संग्रह हुआ, कहाँ चिंता जताई जा रही थी कि 1 लाख हम करोड़ पार कर सकेंगे या नहीं। अब हम 1.5 लाख करोड़ से ऊपर लगातार, यानी कह लें कि 5 बार हम प्राप्त कर चुके हैं। यहां पर आपने ये कहा कि ये रिवाइवल का संकेत दे रहा है, तो ये रिवाइवल हम चतुर्मुखी देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं, या चुने हुए क्षेत्रों में ही हमें नजर आ रहा? हेलो, सुषमा जी हमारे साथ लाइन पर हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। श्रोताओं, हम फिर से लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सुषमा जी के साथ। खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि 2,000 रुपए के लगभग 88% नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। आरबीआई ने आज मुंबई में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 31 जुलाई 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3,14,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस तरह वर्तमान काल में 42,000 करोड़ रुपए के आसपास मूल्य वाले 2,000 रुपए के नोट अभी भी चलन में बने हुए हैं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने आज यह भी जानकारी दी कि प्रचलन से वापस मिले कुल नोटों में से लगभग 87% विभिन्न बैंकों में जमा कराए गए, जबकि शेष लगभग 13% को अन्य मूल वर्ग के बैंक नोटों के साथ बदला गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने पास बचे हुए 2,000 रुपए के बैंक नोटों को अगले 2 महीनों में या तो जमा करा दें या बदल लें, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक ही है। हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा जी। सुषमा जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू मनोज। जी, आपने यानी 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक ये कि
जो आंकड़े दिख रहे हैं 1.5 लाख करोड़ से ऊपर 5 बार लगातार अब राजस्व संग्रह हो चुका है, यह रिवाइवल को दर्शाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो रिवाइवल है, यानी ये जो हम एक पुनर्बहाली अर्थव्यवस्था की देख रहे हैं, वो किसी क्षेत्र यानी चौतरफा है या कुछ खास चुने हुए क्षेत्रों में ही हम देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो रिवाइवल है वो चौतरफा ही समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो अगर आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र देखें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर रिबाउंड हुआ है। अगर आप ऑटो की क्षेत्र देखें, वहां इतनी उत्पादन हो रही है 4 पहिए वाले वाहन की, और 2 पहिए वाले वाहन जिनकी इतनी नहीं हो रही थी, उनकी भी अब उत्पादन हो रही है और उनकी बिक्री हो रही है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, और रियल एस्टेट की क्षेत्र में देख लीजिए कि वहां पिकअप हो गया है। हाउसिंग क्षेत्र में देख लीजिए, तो ये काफी, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे देश में बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है हमारे जीडीपी का, वो सर्विसेज क्षेत्र है। तो सर्विसेज में भी बहुत पिकअप हुआ। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो कोविड के टाइम में उनकी बहुत डिप्रेस्ड हालत हुई थी, वो बढ़ गए हैं। अगर आप टूरिज्म देखें, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, अगर एंटरटेनमेंट सेक्टर देखें, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं इनका भी बहुत जोरों से रिवाइवल हो रहा है। तो चौतरफा ये देख लीजिए इसमें, और तभी रेवेन्यू इतना आ रहा है जीएसटी, नहीं तो इतना नहीं आ सकता था। Sushma ji, when we're talking about revival and the all-round growth in the economy, today figures have come out for the manufacturing PMI for the month of July, and it has again shown a healthy expansion pace. It's again for the for the 25th month, it is above the 50, the key level of 50. What do you think are the factors that have led to this overall growth in the manufacturing sector also? I think this is the revival of demand. Perhaps not as much as the corporate sector or the industry in general would have liked, but it is definitely a revival of demand. And in fact, I think one of the contributing factors has been that our agriculture sector has continued to do well over the last few years, despite the fact that during COVID, you had depression in the economy, you had a contraction in the economy, but you did not have that happening in the farm sector. And so that consistent increase in output, and that has the good harvest that we have been having every year, that has enabled the demand in the economy to pick up more than expected. And I think that is one of the reasons that you will find that the manufacturing sector is doing well. It is reviving over 50, as you pointed out, which is a positive factor. सुषमा जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बातें आपने कही थी, वो ये कि देश में कर चुकाने वालों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या हम यानी इसे संतोषजनक माने कि जो अभी आंकड़े आ रहे 6.5 करोड़ के से कुछ अधिक लोग नियमित कर चुकाने वाले बन चुके हैं, इसे हम एक संतोषजनक आंकड़ा माने, या अभी भी देश की जो आबादी है, लोगों के पास जो आमदनी है और जो अपनी अर्थव्यवस्था है, उसमें ये आंकड़ा और बढ़ना चाहिए नियमित कर चुकाने वालों का? नहीं, ये तो पॉजिटिव ही आंकड़ा है जो आ रहा है। और हाँ, हमारे देश की जो जितने हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जरूर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप देखें ये पर्सनल लोन्स और ऐसे ही जो कर हैं, उनमें हमारी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हुई है। मेरे ख्याल सिर्फ एक क्षेत्र में शायद एजुकेशन लोन्स में इतना अच्छा नहीं है, वहाँ एनपीएस हुए हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो रिपेमेंट का जो मतलब रिपेमेंट का जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहा है हमारे देश में। बाकी बैंकिंग क्षेत्र में जनरली जो एनपीएस हैं वो तो बड़े बड़े जो कंपनीज वगैरह के हैं, कॉर्पोरेट एनपीएस, वो खैर इसके बारे में हमने काफी बात पहले भी की है,
वो काफी नीचे आ गए हैं और मैनेजेबल लेवल्स पे पहुंच गए हैं. Sushma ji, we were just talking about the revival in the economy, and like we just discussed the latest PMI figures for the month of July. Now, although that's a good news, but we've been seeing an increase in inflation, retail inflation, especially in the recent months, due to the rise in food inflation. Now, if this rise continues as is being feared, do you think that is going to impact the overall economic activity, manufacturing activity, and the other sectors as well? No, I don't think, because at 6%, the expectation is that probably inflation would range around 6%, even in August. Probably a bit higher than had been for the last few months. But due to, as you pointed out, due to food inflation, we are seeing rising prices of a whole lot of food products. But I don't think this is going to have a significant effect on the on the economy as such, because this is still within manageable levels. This still remains within the tolerance band of the central bank, and it is not it is not a level that would that the industry would find it difficult to cope with. If it goes beyond 6%, yes. If it goes beyond 6 to perhaps 7%, or goes beyond, in that level, yes, there is a need for concern. But it, as of now, expectations are that it would range around 6%. And of course, the central bank has warned that though they have taken a pause from the rate hikes, they are watching the situation very closely, and they are very concerned about inflation. And if needed, if it goes beyond the tolerance band, then they might again impose a rate hike. So we have to wait and watch on this issue. सुषमा जी, आपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकारी दी. हम श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक फिलहाल लाभ में चल रहे हैं और सरकार की चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय या विनिवेश की कोई योजना नहीं है. राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने आज कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने कुल मिलाकर 1,05,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ घोषित किया. उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण और पिछड़े तथा दूर दराज के इलाकों में ग्राहकों को सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 7,70,000 से अधिक बैंकिंग प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है. उन्होंने ये जानकारी भी दी कि डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए 33 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के ग्राहकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं और किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7 करोड़ 34 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज मामूली गिरावट देखने को मिले. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच थोड़ी सी मुनाफा वसूली की गई, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर दिखा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 68 अंक घटकर 66,459 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक घटकर 19,734 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में अलग अलग रुख दिखा. एक ओर बिकवाली के दबाव में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.23% घाटे में रहा. वहीं निवेशकों द्वारा लिवाली किए जाने से स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ. The key domestic share indices today witnessed marginal losses. The BSE Sensex fell 68 points to close at 66,459. The NSE Nifty slipped 20 points to settle at 19,734. Both indices fell amid mixed cues from the global stocks. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.23%, while the small-cap index surged 0.5%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 12 firms appreciated, while 14 declined. In sectoral indices at the BSE, 7 locked gains, while 13 fell. The overall market breadth was positive as shares of 2,006 companies appreciated and 1,557 companies declined. A total of 155 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 82 रुपए 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 102.1
1.8 के स्तर पर चल रहा था। Sushma ji, what would you say about the way the markets have, yesterday we saw there was quite an appreciable rise in the Sensex. Today, of course, it closed almost flat. And in the previous sessions, there were 2 days of continuous when the Sensex ended in the red. How do you see this whole movement and the volatility in the market? Well, this market has to be seen in a context, and the context is that for the last 5 months, consistently, we have seen a bullish trend. And this is, so if we have a, few days of a sort of profit booking and a few days of bearish trends, I think, it's perfectly all right. It is not anything to be very concerned about. And I think we have to see, as I said, see it in the context. And the context is that for the last 4 or 5 months, we have had a huge inflow of funds from the foreign institutional investors. And I think from April, I think the estimates are that they have poured in about $17.73 billion into the Indian markets. The other thing that has impacted the market, of course, in recent months, is the corporate earnings that are coming in, the results that are coming in, especially for the June quarter, which have come as per expectations, and that has also buoyed the market. So, the market has been fairly, buoyant, bullish, and today it is slightly down as compared to yesterday. So I don't think there's anything very significant about the decline right now, unless we see this kind of decline happening for several days or for a week or so. But as of now, I think the general trend of bullishness continues in the Indian market. यहाँ पर हम सुषमा जी ये समझना चाहेंगे कि जो विदेशी कहने के निवेशक हैं, FIIs हैं, उनकी अच्छी खासी खरीदारी अब देखने को मिल रही है। जो आंकड़े वृहत स्तर पर अर्थव्यवस्था से संबंधित आ रहे हैं, उसमें हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में भी यह उनकी ओर से लिवाली की जाएगी और उनका धन आना जारी रहेगा। देखिए, अभी हमें आगे वाले दिनों में देखना है कि ये थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बात की है इन्फ्लेशन के बारे में। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए, उससे FII थोड़ी सी हेजिटेंट हो जाएंगी। और दूसरा, जो पूरे विश्व भर में सेंट्रल बैंक्स का जो हॉकिश ट्रेंड है, उससे भी FIIs का मतलब देखना है कि वो उनकी रवैया क्या होगा आगे वाले दिनों में। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे ये, और खैर तेल के जो दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये जो 2-3 चीजें हैं, इनको देखना पड़ेगा आगे वाले दिनों में कि, और उस बेसिस पे FIIs वो आगे के दिनों में अगर वो निवेश करते रहेंगे कि नहीं, ये हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है पिछले साल की कुछ महीनों के लिए FIIs का इनफ्लो आया था और फिर रुक गया था। तो और उसके असर ये भी होगा कि US फेड के जो रेट हाइक्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा FIIs के ऊपर। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों के समर्थन से 1.3% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.9% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हिंग सेंग 0.3% नीचे आ गया। इस बीच चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स, दोनों सूचकांकों में कोई खास उतार चढ़ाव आज देखने को नहीं मिला। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां नरमी का रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% नीचे चल रहा था, जबकि फ्रांस के CAC 40 और जर्मनी के डेक्स दोनों में 0.9% की गिरावट दिख रही थी। Sushma ji, if we talk about the Chinese economy now, we have seen that the manufacturing activity has fallen for the 4th straight month in July, and the service and the construction sectors are said to be almost on the verge of contraction.
So, yesterday we saw that authorities in China, they came out and at a press conference they talked about some additional policy guidelines, but there were no stimulus that was announced. Why do you think that is happening? Well, the impact in China of the earlier policies, it is still reverberating on the Chinese economy. The zero COVID policy, which was implemented last year, and that caused a lot of the companies' production to stall. Restarting everything has taken time. Plus, they are having, of course, as you are aware, problems in the real estate sector, and so these are the issues that are affecting the Chinese economy. The problems of getting back into the same pace of output. But it will take them some time, but I have no doubt that the Chinese economy will definitely revive. It may take a little while, but they have the wherewithal, they have the infrastructure. It is just that as they followed certain very restrictive policies for too long a period of time. And that, of course, was one of the reasons that companies, American and other international companies decided that, let us follow what is known as a China Plus One policy. Yes. Continue to work in China, but let's put some of our investment in one other country. And India has been one of the that companies are looking for. But though we have to compete with other countries like Vietnam, Indonesia too. Moving on to the U.S. market, the U.S. stocks rose marginally yesterday amid traders' hope of good corporate earnings, while investors' cautious approach ahead of a key employment report due this week capped the gains. The Dow Jones Industrial Average rose 0.3% and the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index added 0.2% each. Moving on to commodities, oil today fell around 0.5% from its 3-month high levels. However, tightening global supplies and demand growth prospects capped the losses. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.10 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81.40 per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। सोना और चांदी की कीमतें आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में थोड़ी सी नरम दिखी है। अगस्त में आपूर्ति की जाने वाले सोने का मूल्य एमसीएक्स में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 370 रुपए घटकर 59,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 855 रुपए नुकसान के साथ 74,570 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी सोना थोड़ी सी कमजोरी के साथ $1,992.70 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी घटकर $24.60 प्रति औंस पर चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. GST collection for July this year crosses 1,65,000 crore rupees level, witnesses 11% growth over the same month last year. Almost 88% of the 2,000 rupee banknotes received back from circulation, says RBI. Domestic benchmark indices slip marginally, and gold falls to 59,200 rupees per 10 gram for August contracts at the MCX. And that is it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. Market Mantra. Market Mantra.